ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਡਰੋਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਡਰੋਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ So my point is that what does this look like to you? What is ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। Just show him. एक मिनट one at a time. Of course the BJP knows, the government of India knows that drones are coming. थोड़ा एक क्यों रेंज क्यों बताई है 51 किलोमीटर? ये रेंज 51 किलोमीटर इन्होंने इसलिए की है क्योंकि सानू हम drones, we have seen the drops at 31 kilometers. Next stage may go to 40, next stage may go to 50. So they have given a 50 kilometer range. So BSF kar diya. The government of India knows. We share information. Let me tell you, Punjab Intelligence, IB, RAW, NIA, all interchange information. So sanu ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ. They know everything. That is one of the reasons I think that they have taken the range to 51 kilometers. No, 1 minute. You are talking about last government. You are talking when I said so. I said so, there is these things going underneath, tunnels going under the wire. And I said that normally the posting of a BSF battalion is 2 years. Not only, I didn't say there, I went to Delhi and I met Mr. Advani, was Home Minister then. And मैं उन्होंने कहा सी कि तुसी ये 2 साल तो 1 साल ते कर दियो. Because ताकि जब Rangers or BSF are there for a long time, they get to know each other. And there can be collaboration in movement of drugs and all. ये drugs के बारे में क्या सी. And we should somehow or the other keep this ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ then Mr. Advani ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ we have looked into this, the cost factor is too much, that instead of doing a rotation of a unit every 2 years, 1 year we have to do it 2 years because the cost is too much. Even in the military army we do it 2 years. So similarly is the case ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Punjab BSF has also been done 1 year. मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ. मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ security of the nation is important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, but then that is their decision. Captain Saab, it's felt once you form the party. Captain Saab here. Captain Saab, once you form the party, it's felt you will be. This is here. So it's felt once you form the party, you will be aligning with BJP. And over the last few days, I never said aligning with BJP. I said we will have a seat sharing. We want to. I haven't talked to BJP. I haven't talked to Mr. Deensah's outfit. I've talked to nobody. But what I want to do is, look, I'll use a military term. No, किन पार्टियां का जिक्र किया है? क्या चीज? 52 साल हो गए कांग्रेस से, अगर 10 दिन हो रहो जान तक की फर्क पै जाऊगा दसो? कैप्टन साहब पंजाब के किसानों का सवाल है। पंजाब के किसानों के लिए तुसी ये गल कीती है कि तुसी मोदी सरकार तो ये मसला हल कराओगे, पर 4.5 साल तुसी मुख्यमंत्री रहे हो, 11 महीने किसानों के अंदोलन नूं चलदे हो गए, 700 किसान उत्थे शहीद हो गए ने। की तुहानूं लगदा है कि हुण मोदी सरकार मन? देखो गल सुनो मेरी, 4.5 साल नहीं, ये तो पिछले नवंबर तो शुरू होया किसानों का मसला एंड साल होया। ये एक गल है कि उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया सी किसानों ने कि असी किसी पोलिटिकल पार्टी नूं असी अपने इस अंदोलन दे विच असी शामिल नहीं करना चाहते।
So therefore ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, nobody touched the farming community. मैं कर रहा होम मिनिस्टर नाल, क्योंकि होम मिनिस्टर दी और किसानां दी गल चल रही है और उन्हां दे टीम्स ने, they are people who are working behind the scenes with home ministry दे उन्हां दे नाल किसानां दे नाल. तो इत्थे there we can play a role because we are aware of the situation here. मैं तुहानूं दस्सिया कि मैं 9.5 साल उरे रहा एज होम मिनिस्टर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो बीन 10 साल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ पंजाब.